Hello and welcome to the third day. Hello and welcome to the third day of our program, Foundation Chemistry for the beginners who are aspiring for JEE Advanced, NEET, and other competitive examination so that they can grab a seat in any coveted institutions, maybe ISER, Niger, IISc Bangalore, NEET medical, IITs. So the foundation program that the Uranium used to offer to the bright students who are really hardworking and committed to reach at their destination goals. For them, we conduct a 7 days, sometimes 10 days program. Usually 7 days, I extended to 10 days because I invited some guys, including my granddaughter, so that they were not in our fold before. I knew that will be a little slow pace, but the momentum will be built up as we continue further and further in this 10 days program. We will be taking up more and more pace. We will gear up to greater and greater momentum. We are joined by Pranab, Sijal, Samidha, Nihar, Harshita. Welcome, Harshita. Good evening, sir. Kali join kori parthilo? Yes, sir. Join kartili. Good. Okay. Let me share my screen. And yes, I have shared my screen and will now stop annotation from your side and start the proceedings in some time. We are joined by also Abhijit Biswal. Okay. Welcome those who are watching in the YouTube live streaming program. Salam alaikum. Sabba khair. Namaste. Good afternoon. So yesterday, I could not give ample time to my satisfaction. I had to leave almost halfway to attend a family get-together at Bhubaneswar. Such a thing will not arise today. I will be comfortably proceeding till I am tired, I am fatigued. I congratulate those who are watching outside, and I find that many more they watch after this is recorded, is officially done, completed in the Zoom program. Many watch later. As a matter of routine, they follow us. Thank you for them. And if you benefit from our programs,
you have not subscribed to our channel, please never ever hesitate to do so. By that, neither you are gaining, losing financially, nor I am gaining financially, because I have not monetized my program. All our activities are free of cost. So that is the encouragement that you are giving by subscribing to the channel. And you will get ample benefit throughout your 2 years program. I make from time to time important videos in important topics in the +2 program. Of course, I also make videos for higher level students, MSc students, PhD students, but that will be distinguished. You just leave them. School level, that means high school level, higher secondary level, and college level. There are so many layers, so you can identify from the thumbnail itself. Just forget it. Thank you. So we are now joined also by Benazir. I was expecting you yesterday, but I'm sorry, we were absent. What happened, Benazir? Yes, sir. Sorry, sir. You were absent yesterday, I guess, Yes, sir. Some net issues. because I thought that because I changed the time schedule from No, 6:30 sir. to No, sir. 6:30, No, sir. you encountered with some problem. No, sir. No, sir. But have you watched my video, just for my knowledge sake? Sir, half of it. Oh, okay. You try to watch it, because we are not Okay, going to sir. that. Yeah, Uh, yes, sir. Good, good. And also, in this particular program, let me be very candid. I am watching to those, maybe a handful or a two or three or one, maybe none, that if at all I offer and you offer for a further guidance from my side, whether I will be interested in you or not, to continue my guidance throughout your 2 years program in a sustained manner. If you want, whether I will want or not, that also is being testified. Someone who doesn't give much importance to our 10 days program with a pretext that he has some other things, well, therefore I am recording. If one has to, one becomes little bit committed and wants that this instructor will help you in the long run for a longer period, then you have to show your commitment. Otherwise, there is no point. Okay, we'll start. Any doubt you have? I gave you the task, although very late. I was so hasty in my yesterday's class after the class was over that I posted a wrong file, previous old file, and that too I did not make it public. It was a totally a private file, so you could not open it. So I felt so sad. I was just sitting in the car. I was feeling very sorry for what I did. Anyway, I compensated, made up the loss I made. I gave at 11:30 night. I posted both in your WhatsApp group, as well as in the video itself, as well as prize question, which most of you have not got the time to check, because most of you either going to coaching classes or schools integrated with coaching that has already started. So despite that, you are attending my evening program. Hats off. Hats off. Okay. Any doubt you have? Or else I will start my program. No. Rudra, do you have anything to ask? No? No, sir. Okay. Anyone? Yesterday, we have taken up the balancing of what? Balancing of
Ionic Ion is equal by which method? by ion Ion electron method. No. Oh, yeah. Ion electron method. In which medium? acidic In medium. acidic medium. Acidic medium. So, in acidic medium, what are the rules? What are the steps that you follow? First, you equalize. What? The element other than oxygen and hydrogen, right? Then you equalize oxygen by adding what? H2. Water. The one I gave you. I'm doing it What? once again. I gave you this permanganate ion with stannous ion, give you Mn2 plus SN4 plus, right? In acidic medium. This was a prize question for yesterday's class. Now, I have written acidic medium. So I didn't put water on any side or H plus in any other side. That is automatically, that will come automatically. So tell me which ion has been reduced to which ion. Supposing we will take first the reduction step. Tell me which ion is reduced to which ion. Who will tell? Raise your hands. I will expect some others to join this time, not Rudra and Ayush. Se dijon to korijanti. Yes, Sijal. Some manganese +7 no +2. Very good. तुम कौन से सहदेव कैटेगोरी रखी सहदेव ट्रेट नहीं छ पचारे कह हाथ टेकिलनि कौन पे No So- sir, phone hang ହେଇଯାଇଥିଲା। अच्छा परमांगनेट आयन टा रिड्यूस हेची Mn2 प्लस को परमांगनेट आयन टा रिड्यूस हेची Mn2 प्लस को अवश्य तुमको जदि पचारिबी ऑक्सीडेशन नंबर मैंगनीज रो कोन हेची तुम कहबो एटी बाहर करिवो x मेथड रे x - 8 = -1 x = +7 सो एटी थिला +7 मु लेखुनी सेटा ऑक्सीडेशन नंबर टा होची फेक चार्ज फॉर ए कोवेलेंट मॉलिक्यूल एंड आयन किंतु एई चाह परमांगनेट रो असली चार्ज एटा Mn2 प्लस रो असली चार्ज अवश्य मोनो एटॉमिक आयन केस रे तार ऑक्सीडेशन नंबर जहा आउ तार वैलेंसी सेया एक्चुअल चार्ज भी सेया सेति पई गोटे पिला को पचारथिला द ऑक्सीडेशन नंबर इज ए नाउ ए सिनोनिम ऑफ वैलेंसी except that valency was meant for a radical, a part of the molecule. If it is a polyatomic ion, yes, for the entire ion, 2 minus 3 plus 1 plus. But oxidation number is for one single atom. If it is a polyatomic ion, then you have to find the individual atom. What is its oxidation number? By a theoretical, imaginary kind of breaking the bonds in a heterolytic manner, the electron pairs will be transferred to the more electronegative atom, and the hypothetical charge that each atom will carry for that process, that will be the oxidation number. That gives us enough insight and logic to monitor how the reaction is happening, how the oxidation number is changing or not changing, all these things. Now, the first rule, I remind you what I did yesterday in a haste. First, we have to equalize the element other than O and H. Here is manganese, and we need not have to do anything. The number is same in both the sides. Had it been Mn2O4, would have definitely multiplied 2 here. But such नौबत नहीं आएगा यहाँ. The first rule is redundant here. Is not necessary. And then you ion oxygen. How many oxygen atoms are excess on which side? 4 oxygen atoms are excess on left side. So what do you do? What do you do, Samita? Sir, add oxygen on the right side. No, oxygen is not any product or any reactant. What you do, Benazir? So we'll add 4 water molecules on the right side. 4
The water molecules, H2O. Precisely for water. Ota water ru asibo. So as many number of oxygen atoms are excess on a particular side, you have to add same number of water molecules. That will provide oxygen. But by doing so, hydrogen becomes excess. 4 to the 8 hydrogen has been excess. So how to again equalize hydrogen atoms? So we need to add 8 hydrogen atoms on the left hand side. No. There is no hydrogen atom. Acidic medium contains hydrogen ions. Did you say hydrogen So ions? hydrogen ions. Did you say Sir, I that? said atoms. Sir, I said atoms. Sir, it's Okay. ions. Okay. So same number of hydrogen ions you have to add on the opposite side. 4 to the 8. So you have to add 8H plus on the opposite side. So we have equalized oxygen. We have equalized hydrogen. Then you need to equalize the charge. You calculate the net charge of the left side. It is -1 for the bulky permanganate ion and +8 for the 8 protons or 8 hydrogen ions. So altogether +7. And here the only charged ion is manganese 2 plus or +2. So here +2, here +7. So you have to add electron on which side so that the two sides will have equal charge. Yes. So on the left hand side. Because Benazir is now, and Benazir, I'm sorry to ask you, are you a girl or a boy? Sir, I'm a girl. You're a girl, yes. Oh, okay, I'm so sorry. So she is hijacking the class. She should, because you guys will remain silent. Of course, I have requested Rudra to remain silent. I know in all circumstances he is committed and he is focused. So also Ayush and those who are uranium guys, erstwhile uranium guys, so they will be there because their special things is coming very soon. So how many electrons I will add? Okay, Sir, 5. Okay, Samita? Sir, 5 electrons in left side. Precisely 5 electrons in the left side. कारण ये -5 ହେଇଯିବ इलेक्ट्रॉन सिना ऐड करूचे किंतु चार्ज होची -1 पर इलेक्ट्रॉन सो 5 -5 सो एपटे भी +2 सेपटे भी +2 तो 5 इलेक्ट्रॉन आमे ऐड करिबा तमे कैलकुलेट करी देखि दबो केतेटा इलेक्ट्रॉन को पटे ऐड कले both sides will be having equal charge, so the reduction part is over. Then oxidation. Tell me from the above equation which ion is oxidized to which ion? Nihar, से अनुभवटा खाली के से खेलिला खेली के रही गला जना पड़छ एमती भी रही था से पछरे देखुची कोन यस हाथ टेक समस्त जे माने कहि परिबो हाथ टेक सो तादेरु मु पिक एंड चूज करिवि न हाथ टेकिले मु जानि पारुनी आई एम अंडर द इंप्रेशन दैट तमे बुझुनो मु स्लो डाउन एमती इनफाइनाइटली स्लो डाउन हेले भलो प्रोग्रेस करिवा आ तो गोटे स्टेज रे मु फोकस करिवि केवल जो माने मते फॉलो करूछो ना आदौ मते ये करिविनी समय दबा को इच्छा हबनी जो माने फॉलो करूनो बा अछि जाउछो यस से 2 जण 3 जण आउ अन्य माने दे डोंट आउ किए रहिला आउ गोटे रहिला बेनाजीर स्टानस एपटे रहिला स्टानिक एपटे रहिला आउ ए दीटा काम तो सरी जाईछि केवल रहिला स्टानस बाँ पटे स्टानस सेटा हबो डाण पट को जीवो सेटा स्टार सो +4 रु +2 रु +4 को जाईछि सो दिस इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन राइट साइड रे आसीबो तो आ पई स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 तीनटा जाक किछि एप्लीकेबल हबनी एमति तो नंबर ऑफ टीन एटम सेम अछि फर्स्ट स्टेप इज नॉट रिक्वायर्ड सेकंड स्टेप नाही कारण ऑक्सीजन नाही hydrogen 9 so third step 9 so equalization of charge is the only step required tell me how many electrons I will add on which side Harshita Miss Krishnapriya तमे टिके पछि माइनस सर -2 इलेक्ट्रॉन इन राइट साइड आमे माइनस वाला नुहे आमे नेगेटिव माइंडेड आदो नुहे पॉजिटिव माइंडेड रे को पटे को लिखिबो सर इन लेफ्ट साइड हां
Sir, may I? May I? Yes, may. So plus 2 electrons on the right hand side. Ketata? How many? So plus 2. Precisely. Dita electron. हाँ तुम्हें जदि कृष्णप्रिया तुम्हें कोई था तो -2 एपटे बाम पटे ताले मु कोई था ठीक अच्छे. Loss can be shown as minus in the left side or plus in the right side. ମୁଁ ସେ ମଜାରେ କହିଲି I just told you that I don't believe in negativity. तामाने ମୁଁ कौन सी जिनसे नेगेटिव साइन रे लिखिବାକୁ चाहेनी तेणु ସେଇଥିରୁ ବୁଝି ପାରିଥାନ୍ତ କୃଷ୍ଣପ୍ରିୟା ଯେ ରାଇଟ ସାଇଡ ରେ 2 ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଲେଖିବା ଯାହା ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ରେ -2 ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଲେଖିବା ସେଇଆ ବୁଝିଲ अरे बुझिल कृष्णप्रिया Yes, sir. then you add the two steps to cancel electron you multiply 2 here because 2 electron is in the second step and you multiply 5 here because 5 is in the first step so that 10 electron get cancelled then you add एथरे 2 गुणी देबो फास्ट कोन करिवो ना एटा बेटर होबो 82 88 16 82 88 8 गुणी दियो नने पछरे हैरान पड़ियो 5 5 एटा 10 10 तो कटि जाई छाडो सेनो 2 MnO4 minus plus 16 H plus 5 SN2 plus gives rise to 2 Mn2 plus 5 SN4 plus प्लस 4 जा भी हो एटा एक्चुअल आयन आउ केतेटा पानी ना एठी गुणा हेची 8टा 8 वाटर 8टा पानी so this is the final balanced ionic equation को माने बुझी पारला एटलीस्ट हाथ टेको प्रैक्टिस करियो पड़ियो तमे कहबो हिस्ट्री क्लास भलिया अटेंड करियो मु सुनिबी मोर केमिस्ट्री एटा वीक थिला मोर स्ट्रांग हे जिवो ना जो माने स्कूल लेवल रे केमिस्ट्री रे वीक सेही मानको पई फाउंडेशन अवश्य आ छडा मोर जो कांसेप्ट अछि इक्विवेलेंट कांसेप्ट ए पर्यंत ए मानको देइनी इक्विवेलेंट कांसेप्ट एंड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हाउ टू एस्टिमेट वॉल्यूमेट्रिक slightly loaded हे जिवो अन्य मानको पई for the first timers with me there will be heavy load किंतु एमान को पई किछि हबनी जो माने मूलरू मो पाखरे थिले एटा बुझिलो any question you want to ask okay without further delay तमे तो करिवो प्रैक्टिस करिवो बेसिक मीडियम रे टिके केमती रूल टिके अलगा सेटा मु कहि दोछि जदी तमे देखिबो कोनोसी इक्वेशन रे OH minus को पटे अच्छी लेफ्ट रे थाउ कि राइट रे थाउ then you will be sure that the reaction has taken place in basic medium और से ब्रैकेट रे लिखि देथिबो बेसिक मीडियम तुमे मनक मन रूल अनुसार OH minus एटी जंती H plus दउतिलो एटी OH minus दबो so today I am happy that many are watching. Manoj Kumar Tripathi sir, namaskar. I am Ashish Tripathi. Oh, Ashish Tripathi to tame acha. I can't attend today class in Zoom for some problems. I am really sorry for this. Okay, no problem. Oh, Ashish 89. Seti achi. Okay, Ashish, good. Asha sir, good afternoon. We have changed the time schedule from 6:30 starting time to 5:30. The remaining days will be 5:30 onwards. Minimum 7. 7 p.m. is the minimum. Maybe 10 minutes more or less. That will be fine. In basic medium, supposing we take up, say, chlorine plus OH minus. I'm taking a very simple example. This one. The molecular equation we also balanced by EBD method, this proportionation reaction, chlorine goes from 0 to +5 here and chlorine from 0 to -1. So this is a kind of
redox disproportionation reaction. But if you are asked to balance this ionic equation, then the rules are little bit different. What you do, same. Supposing we take the oxidation step fast. No hard and fast rule. You will take up the oxidation step fast or reduction step fast. So chlorine in left side you copy and chlorate ion in the right side you copy. But mentally you are sure that here chlorine goes from 0 to +5. If you are thorough in finding oxidation number in a flash, that's your practice level, then you can immediately know that this is the oxidation step. Then the first rule is same. Equalize the element other than oxygen and hydrogen. So you simply have to multiply by 2. So chlorine atoms are equalized. Then same, oxygen. Next target is oxygen. So to equalize oxygen, the same second rule is applicable here. You add in the opposite side 6 water. So as many number of oxygen atoms are excess in a particular side, same number of water molecules are added on the opposite side. Then you see how many hydrogen atoms are excess. So here the third rule is different. The number of hydrogen atoms excess in the left side is 6. 6 2s are 12. So same number of OH minus ions have to be added on the same side, and in a one breath you also add same number of water molecules on the opposite side. So you have to kill 2 birds in one stone. You have to add same number of OH minus ions on the same side and same number of water molecules on the opposite side, so that we have equalized. Because OH minus, unlike H plus, contains not only hydrogen but also oxygen. 2 elements are there. So the moment you add OH minus ion, the hydrogen is equalized, but oxygen becomes different. So to equalize hydrogen, you have to add 2 things. Same number of OH minus ion on the same side and same number of, because the excess 12 hydrogen, 12 oxygen that you are adding, that will be compensated by 12 oxygen by adding 12 water molecules on the opposite side. And the extra 12 hydrogen, 24 hydrogen that you are doing, that the 12 hydrogen, and this is 24 hydrogen. So already 12 hydrogen is already there in the first step, already 12 hydrogen. So on this side 24 and this side 24. So oxygen is balanced, hydrogen is balanced. So the third rule is different. I'll write down and you'll copy that. In the third rule, as many number of hydrogen atoms are excess, same number of OH minus on the same side and same number of water molecules on the opposite side. Is it clear now? Yes? Yes, sir. Yes, sir. Then, Yes, sir. then to make it little more cleaner, you remove water molecules. Before going further, epote 6 pani, epote 12 pani. Kahi rakhiba 2 pote pani. Eithi tike taku cutting kardele, it will look better. So eithi 6 pani ku kato. 12 ku category 6 karo, so that pani goes from one side, excess pani remains on a particular side. So then asigala equalization of charge. Third step is different. Equalization of charge ke koi paribo dekhi kahila, since it is oxidation step, Krishnapriya, tumo jodi chahucho negativity tamaro tahale left side re minus kari lekhibo, jodi amaro positivity nabo tala right side re positive kari kari setikta electron lekhibo. So tell me how many electrons you are adding on the right side so that the 2 sides will have equal charge. Sir, plus 10, Cool. sir, 10 electron in left side. Kono, plus na minus? Sir, Left. plus.
हे भगवान एते तुमको कहली नेगेटिविटी पॉजिटिविटी तुम पुणी कहलनी एटा गोटे ऑक्सीडेशन स्टेप रे 0 रु +5 को जाउछु माने इलेक्ट्रॉन लॉस करिछि तेणु लॉस करिछि माने जदि इलेक्ट्रॉन प्लस साइन रे देखैबो तला राइट साइड रे प्लस रे देखैले सेटा लॉस किंबा लेफ्ट रे देखैले सेटा माइनस साइन एते कथा कहला परे भी तमे कहउछो लेफ्ट साइड रे प्लस साइन दबो कोन एबे को आई गिव यू नाउ टाइम टू रेक्टिफाई मिस हर्षिता yes Mr. Patro Nihar Sir, plus 10 electron in the right side. precisely plus 10 electron 10 फिगर टा तमे हर्षिता ठीक कहउतलो किंतु तमे एठी लेफ्ट साइड रे प्लस लिखले केम थबो अरे प्लस सिना लिखुच इलेक्ट्रॉन चार्ज वाइज -1 आमे लिखुचे एपटे प्लस किंतु एक्चुअली चार्ज वाइज -1 एपटे Yes. प्लस करिवो नेगेटिव चार्ज टा बढ़ी जीवो बुझी होची हां जदी 10 Yes. इलेक्ट्रॉन एठी न लिखिवो एठी लिखु जदी -10 इलेक्ट्रॉन लिखले एका कथा माइनस सेति की माइनस तो मो आमे सेति पई हमर स्टाइल होची पॉजिटिव स्टाइल तेणु ऑक्सीडेशन रे डाहण पटे रहिबो इलेक्ट्रॉन आउ रिडक्शन होची गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन सेटा बां पटे रहिबो सो 10 इलेक्ट्रॉन केमती हला टिके कहिलो केमती हला Sir, sir, Da- 12. डाहण पटे -12 अछि यस यू आर करेक्ट एंड बां पटे -12 चार्ज अछि डाहण पटे -2 तेणु 10 टा Yes. इलेक्ट्रॉन ऐड कले ऐड सिना कले किंतु एक्चुअली चार्ज होची -10 एडिशन हला इक्वेशन रे डाण पटे ऐड कले हमें किंतु एक्चुअली लॉस हेची सेटा इलेक्ट्रॉन टा -1 चार्ज हले 10 टा इलेक्ट्रॉन को -10 सो एपटे भी हला -12 सेपटे भी हला -12 दी पटर चार्ज समान हला Yes, sir. के बुझिलो बेनाजीर तमे कोन सोई गलो कि आपने तो क्लास को हाईजैक कर रही थी हाईजैक कीजिए ना Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. दूसरों को दे दीजिए एक मोमेंटम ताकि वो भी डिस्कशन में बने रहें आपके जैसा ना Yes, sir. Yes, sir. तो कौन गोटे भूल रे काट देली कहलो कौन गोटे भूल रे काट देली Sir, 12 OH minus. 12 OH माइनस टा आईटी काटी देली बस सॉरी भला सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेप इज फिनिश्ड सविता कौन पचारछो Sir, can you explain why you added 12 H2O on the right side? ओके मु बुझिली गुड गुड क्वेश्चन अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेप गला रिडक्शन स्टेप रिडक्शन टा किए हेची ए दीटा जंतु जदी पळे क्लोरीन टा तो कॉमन क्लोरीन टा क्लोरेट आयन कर देला पुणी सेही क्लोरीन टा क्लोराइड आयन करिवो एवं सेटा तुम पई खुशी कारण सेतरे किछि नाही ना ऑक्सीजन अछि ना हाइड्रोजन अछि ना वाटर ऐड करियो पड़िवो कि थर्ड स्टेप रे गोटे गुली रे दीटा शिकार करियो पड़ियो किछि दरकार नै खाली 2 रे मल्टीप्लाई करियो फर्स्ट स्टेप टा दरकार एठी बस तापर लास्ट स्टेप को जीवो इक्वलाइजेशन ऑफ चार्ज केता इलेक्ट्रॉन ऐड करियो सेही हर्षिता को वर्तमान एई इक्वेशन टा को चार्ज बैलेंस करियो को हेले दी पटर चार्ज को समान करियो को हेले केतेटा इलेक्ट्रॉन ऐड करिवि को साइड रे Sir, plus 2 electron in right side. Sir, plus 2 electron in right side. पुणी से भूल कल राइट साइड रे ऑक्सीडेशन रे राइट साइड रे कले रिडक्शन रे भी राइट साइड रे ओ माय गॉड अभिजीत Sir, left side. हाँ कौन अरे केतेटा इलेक्ट्रॉन को पटे ऐड करिवि Sir, plus 2 electron in left side. precisely plus 2 electron in the left side so that add सिना कले प्लस किंतु चार्ज होची -2 सो एपटे भी -2 सेपटे भी -2 दी पटर चार्ज समान हे गला तेणु काले भूल हबो गोटे कथा भूलिबोनी
जे रिडक्शन रे बाँ पटे गेन हुए इलेक्ट्रॉन बाँ पटे लिखा जाए ऑक्सीडेशन रे डाण पटे लिखा जाए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन डाण पटे लिखा जाए सेटा जदी मन रखी दबो ताले भूल होबनी ताले वर्तमान दीटा जाकर इंडिविजुअल स्टेप बैलेंस हे गला आपको ऐड करिवो बाय कैंसलिंग इलेक्ट्रॉन कोन गुणीबा एठी 10 इलेक्ट्रॉन अछि एठी 5 रे मल्टीप्लाई करले 5 2 जा 10 10 कटि गला देन ऐड करले एठी 5 क्लोरीन एठी गोटे क्लोरीन एठी 5 क्लोरीन मिसले 6 क्लोरीन हैला प्लस 12 OH माइनस एपटे OH माइनस किछि नै ननी दीपट इक्वेशन रे जदी OH माइनस थांता देन तुमको जदी तुम टिके शार्प देन सेमती मन को मन कैलकुलेशन करी केते रहिला को पटे एक्सेस मार कर दियंत जदी शार्प नुए ताले लेफ्ट साइड रे लेख जेते थोर आसुची लेख राइट साइड रे लेख पुणी अलजेब्रा कला भलिया गोटे पट को आनो जो पटे एक्सेस अछि तबरे करो दैट डिपेंड्स ऑन हाउ शार्प यू आर सो इट रे 12 OH माइनस एंड ये देला कोन 2ClO3 माइनस आउ एठी 5 2 जा गुणिबा को भूलिबोनी 10Cl माइनस प्लस 6 वाटर किंतु एठी गोटे कॉमन फैक्टर 2 अछि कॉमन फैक्टर 2 अछि तेनु 2 रे सब डिवाइड करले सो तमे पाइबो होल नंबर रेशियो एटा हे जिवो 3 क्लोरीन एटा हे जिवो 6 OH माइनस एटा हे जिवो गोटे क्लोरेट आयन एटा हे जिवो 5Cl माइनस एटा हे जिवो 3 वाटर एटा फाइनली दिस इज टू बी सबमिटेड as the balanced equation hela now samidha is asking je kai ki mu dita काम करली तो धरी पारलानी सेटा को मु आउथरे कहबा पई जाउची ओके आमे जो करिथिले कौन जाइथिला क्लोरीन टा क्लोरेट आयन हेतिला आमे एठी 2 कर देले एठी 2 अछि 2 कर देले 6 टा ऑक्सीजन 6 टा 3 2 जा 6 ऑक्सीजन अछि 6 वाटर कर देले ऑक्सीजन सेना समान हे गला किंतु 12 टा हाइड्रोजन एक्सेस हे गला ऑक्सीजन बर्तन समान हे गला 6 ऑक्सीजन किंतु थर्ड स्टेप रे जो 12 टा हाइड्रोजन को समान करने को कौन पाई ये रूल करा हला देखो जदि 12 टा OH माइनस ऐड कले ताहले 6 दुणे 12 हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन समान हे गला किंतु 12 टा ऑक्सीजन एक्सेस हे गला हो कि नहीं हाइड्रोजन समान करने को जाई करी हमें 12 टा ऑक्सीजन को एक्सेस कर देली याडे आगुरु ऑक्सीजन सेम हे सारी थिला आगुरु ऑक्सीजन सेम हे सारी थिला किंतु हाइड्रोजन को कला बेलू को आलू खोलू खोलू सारू बाहर लानी आलू कियारी रे सारू हाइड्रोजन समान हला को 12 टा ऑक्सीजन को कोन करबा जदी हमें 12 टा वाटर ऐड करबा ताहले कोन हला एठी हमें 12 टा वाटर ऐड करले हमर जो एक्सेस होतला 12 टा ऑक्सीजन ए पटे आसी गला तो बर्तन काटी गला ये किंतु आमर 12 टा हाइड्रोजन एक्सेस आई एम सो सॉरी 12 टा हाइड्रोजन एक्सेस थिला ए पर्यंत 12 टा हाइड्रोजन राइट को आसीनी एटा हेला परे 12 टा हाइड्रोजन आसी जिवो एवं हाइड्रोजन रे संख्या समान हे जिवो नाउ वी हैव डन 12 OH माइनस आयन एतरे दीटा गंडगोलिया हे गला गोटे तो 12 टा ऑक्सीजन अधिका हला पुणी 12 टा हाइड्रोजन भी अधिका हला हमें 12 टा हाइड्रोजन एपटे दबार थिला हमें 12 टा हाइड्रोजन एपटे एक्सेस कर देले तेणु 12 टा वाटर कले दीटा काम हो जिवो नॉट ओनली 12 टा ऑक्सीजन जो एक्सेस करथिले सेटा हे गला बट 24 टा हवा फल रे 12 टा हाइड्रोजन जो एक्सेस हला ताकू काटी करी आउ 12 टा हाइड्रोजन जो रहिला दैट विल कंपेंसेट फॉर द 12 हाइड्रोजन एक्सेस इन द लेफ्ट साइड क्लियर है Yes, sir. तो से गुडा को मु सेति मिस करथिली यू हैव राइटली पॉइंटेड आउट मु भाबिली तमे जाननो भाई तदी न जानि पारलो
पचार ठीक अच्छी एठी 12टा OH माइनस लिखला माने एठी 12टा ऑक्सीजन संगे 12टा हाइड्रोजन भी एक्सेस हेगलानी आमे आमे हाइड्रोजन को समान करिने मु बारंबार भूल कहउतली ना आउ रेक्टिफाई टू अर इज ह्यूमन टू रेक्टिफाई इज ह्यूमन मु संविधा केमती गंडगोल मु करथिली मु समस्त आगरे मु कहबी हाउ एन एपिसोड हैपेंड and such a huge misunderstanding happened आउ गोटे संविधान आरे भाबिकरी मु ता ऊपर almost I was mad at her so that happens to her is human सेठी मु कहबार भूल करली कोन ना 12टा ऑक्सीजन एक्सेस हवा संग को 12टा हाइड्रोजन एक्सेस हला आमे चाहूतले 12टा हाइड्रोजन समान करियको तो हाइड्रोजन समान हेला नहीं ऑक्सीजन भी 12टा एक्सेस हाइड्रोजन भी एक्सेस किंतु सेपटे सेतिकिटा वाटर लिखि देले ऑक्सीजन समान हे गला एवं हाइड्रोजन जो थिला एक्सेस सेटा मध्य दीपट साइड रे हाइड्रोजन बर्तन समान हे गला एठी 12 24 हेला एपटे 24 हेला सो एपटे ता माने 12टा हाइड्रोजन को काटिकरी आउ 12टा हाइड्रोजन थिला सेटा समान हे गला सो हाइड्रोजन मध्य इक्वलाइज हे गला हला तो वर्तमान आउ गुटे करो सर गो डाउट थिले हां मिस्टर पाटरू सर हमें जो 2 जो कॉमन काढले सेटा नेसेसरी की हां 2 कॉमन जो काढले सेटा नेसेसरी की टूटा 2 कॉमन काढले जो सेटा नेसेसरी की को टूटा कॉमन काढथिले हां 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 एटा हां कारण बैलेंस्ड इक्वेशन टा होची सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ए जो कोएफिशिएंट माने अछंती जो बैलेंस्ड इक्वेशन रे जो सहग गुडा कोएफिशिएंट्स शुड बी द सिंपलेस्ट 6 12 2 10 एटा लिखले किसी भूल नुहे किंतु आमर नियम होची दिस रेशियो 6:12:2:10:6 सेटा सिंपलेस्ट नुहे ताटू सिंपल हे जीवो 2 रे हरिले बुझिलो सर किंतु केतरा रिएक्टेंट मिसी प्रोडक्ट ता जो तयारी करछन से इंफॉर्मेशन तो ठीक से मिली पारियो जदी कॉमन काढ दल थैंक यू हां बेले बेले सेटा जाना पड़िबोनी किंतु बेले बेले जाना पड़िबो धरो एठी 6टा क्लोरीन एटम संगे 6 OH मिसिले सेही 6टा 5 1 6टा क्लोरीन एटम दउचंती एठी पुणी 3 3 6टा ऑक्सीजन अछि किंतु बेले बेले जाना पड़िबोनी किंतु रूल वाइज हमकु सिंपल होल नंबर रेशियो करिया पड़िबो हला यस सर एक केस रे पूरा जाना पड़ुची किंतु आ गोटे जिनस जो फ्रैक्शन बाहरुला से फ्रैक्शन टाको मध्य एलिमिनेट करने को पड़ो बाय मल्टीप्लाइंग एटी डिवाइडिंग कले छोट कले सेठी फ्रैक्शन टाको एलिमिनेट करने को डिनोमिनेटर जोटा से गुणी देले सेटा जत्ते बढ़ी जाऊ पछे फ्रैक्शन रहइबनी दैट इज द रूल ओके देन आ गोटे कल देखिबा तापरे हमें पळै जिबा आ गोटे डिपार्टमेंट को तर मु एठी लिखिबिनी एटा गोटे आयनिक इक्वेशन मु देली देखिकरी कहि परियो कि एठी लिखि देबी बेसिक मीडियम आई गिव यू 2 मिनिट्स टाइम देखिबा कहार केते फोकस अछि फोकस एगुडा सब फोकस आगुरु टिके साउंड प्रैक्टिस थिबो फार्मूला राइटिंग रे आयनिक इक्वेशन बिल्डिंग रे ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमिनेशन रे अवश्य एठी ऑक्सीडेशन नंबर दरकार नै किंतु मने मने तुम कहि परिबो केतेरु केते कमिला कहिलो मैंगनीज रो केतेरु केते कमिला रुद्र कहिलो सर सर +7 नो +4 प्रिसाइजली परमैंगनेट रे थिला +7 आउ MnO2 इज ए सॉलिड इट्स नॉट एन आयन इट इज ए इनसॉल्युबल सॉलिड MnO2 सेतरे +4 सो +7 रु असला +4 एटा लिखिबोनी एटा आयनिक इक्वेशन रे ऑक्सीडेशन नंबर लिखिबोनी बाहर रफ रे करिवो एवं ऑक्सीडेशन कोन हला सल्फर केते रु केते गला के कहबो रुद्र रुद्र बुझी निहार कहलो सर सल्फर +6 रो +8 +8 गुडे कोन सल्फर के ताहे ता जिंदगी रे के +8 जाई परियो तार तो 6टा वैलेंस इलेक्ट्रॉन केते रु केते गला रुद्र सर +4 रो +6 हाँ से मु कहूची निहार तमे एक्स मेथड रे बाहर करो मु तो भाबुथिली तमे प्रैक्टिस करी करी जति की देइथिली देखि देखि कहबो ए अंक गुडा को कोन दरकार
कागज कलम x minus 6 is equal to -2, x is equal to +4 बाहरला एपटे राइट साइड रे x minus 8 is equal to -2, x बाहरला +6 तो सल्फर टा +4 रु +6 को जाइछि तो सेठी ऑक्सीडेशन हेछि सल्फाइट ion has been oxidized to sulfate ion and permanganate ion is reduced to manganese dioxide it ion नुहे तीनटा जाक आयन किंतु MnO2 टा सॉलिड तो बर्तन करो धर आमे प्रथमे करिवा रिडक्शन स्टेप करिवा एज यूजुअल नॉन तुम ऑक्सीडेशन स्टेप भी करि परिबो धर आगे ऑक्सीडेशन स्टेप करिवा तुम करो मु 2 मिनिट समय दे देछि आ किछि मु देछि सेतरे ओहो यार ये जो सॉल्यूशन टा पठेछि सेतरे सबुडा का अछि तुम देखिबोनी निजे करिवो जदि देखि देबो ताहले किछि तमर लाभ होबनी सिजल काई हाथ कि कर सालनी कोन सिजल करि सालला परे हाथ कि कर सालनी नो सर करूची करूछु हाथ 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 डाउन करो कर सालला परे हाथ कि रुद्र कर सालनी नहीं हाँ मु रूल्स एटी लिखि दिए रूल्स होची 1 equalize element other than O and H first rule same as it be same add H2O to equalize oxygen then third ta is different eta is different add OH minus ion on the same side and water on the opposite side of course on the basis of hydrogen excess hydrogen a good different and 4 is equalization of charge एटा टिके लिखि दबो खाता रे लिखि दबो टिके सरी जाऊ समय देवी टिके लिखि दबो हाथ टेकी देलानी पाट्रो बाबू आयुष आयुष कौन ठीक हेतिबो तो ना सॉल्यूशन टा से देखिबोनी निजे स्ट्रगल करिवो केबे भी हार मानिबोनी राइट जो माने यूट्यूब रे बसी देखुछ लाइक आशीष त्रिपाठी एंड अदर्स दे आर फॉलोइंग यू शुड हैव ए कॉपी एंड पेन इन योर हैंड सो दैट आमे करबा जेति की करबा लेट अस एंजॉय आमे तो समय हे परुनी घरे किछि प्रैक्टिस करिया को जदी हे परस तो भलो कथा तो नई परस नाही जदी आमे ठीक करी बुझी दबा किछि किछि प्रैक्टिस कर दबा एठी मो संगे रे देन आल्सो इट विल बी सम रिवार्डिंग फेनोमेना आ जोड़ा का मो फाइल रे जोड़ा को मु वर्क आउट कर देछि सॉल्यूशन कर देछि एग्जांपल हिसाब रे एवं एठी डिस्कशन कलिनी आ गोटे नै गली सेटा को निजे करिवो एवं मिलेइबो आयुष रुद्र बेनाजीर बेनाजीर केते हला कहलो फाइनल मते इक्वेशन ता कहि दियो ओके सर सर 2MnO4 minus plus 3SO3 2 minus वेरी गुड plus
H2O कितने 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 इसको कितने कितने plus हाँ plus H2O. गोटे ओनली वन Yes, sir. ओके राइट साइड Then right side 2 MnO2 plus 3 SO4 2 minus plus 2 OH minus. ए बाबू रुद्र एटा ठीक अछि सर मोर टिके अलग होची आयुष तमर एटा हेची एटा नहीं सर सर 2OH माइनस 2OH माइनस हेनी OH माइनस को पटे अछि बां पटे अछि की आउ पात्र बाबू सर सेम आसी से आइची यस सर देखिबा अब पानी के पानी दूध के दूध पता चल जाएगा एटा टिपि सलनी एते रूलटा ना परे टिपिबो सर टिके लिखिबो लिखिबो ना आगो एटा कर दबा तापरे मु समय देबी चलो रिडक्शन स्टेपटा करिबा MnO4 माइनस ना कोन देछि यस MnO4 माइनस टा हेछि MnO2 बेसिक मीडियम रे बस बेले बेले पिला कोन करंती गोटे स्टेप रे चार्ज थिबो -1 थिबे ता परे चार्ज टा भूली जिबे माइनस साइन टा दबा को भूली जिबे सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भूल जिवो पास भूल गला तेणु पूरा चाहि रथिबो जदि माछ रंका चढ़ई माछ को चाहि रखिता खटकिनी गुड़ाए सेमती आकु पूरा फोकस रे रहिबो ना चार्ज केतेबेले भूल हबार स्कोप दबो ना फॉर्मूला राइटिंग रे भूल हबो नाउ फर्स्ट रूल होची मैंगनीज मैंगनीज समान अछि गोटे गोटे फर्स्ट रूल इज नॉट रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑक्सीजन केतेटा एक्सेस अछि चारिटा एपटे दीटा एपटे एक्सेस दीटा एक्सेस जतटा दरकार तो दीटा ऑक्सीजन एक्सेस अछि दीटा वाटर मॉलिक्यूल ऐड कले फर्स्ट स्टेप रे देन हाइड्रोजन केते एक्सेस लाइपोड साइड रे बां पटे हाइड्रोजन नाही डाण पटे 2 2 जा 4 हाइड्रोजन सो मु जो कहिछि रूल आ गुटे भी रूल मु कहि परिबी जदि कहि देबी तो किछि पिलांकर कंफ्यूजन नै पारे बहुत कोचिंग सेंटर रे से माने कहंती आ गुटे रूल कोन ने जति के ऑक्सीजन एक्सेस अछि सेतिकिटा OH माइनस एंड तर अपोजिट साइड रे ऐड करो पुणी हाइड्रोजन जति के एक्सेस हला त अपोजिट रे वाटर ऐड करो सी साइड रे सेतिकिटा OH माइनस एंड ऐड करो एका जिंस सो सेटा भी मध्य कहि देबी किंतु मु एई जिंस कहे एवरेज पिला को गोटे कथा कहवा उचित मल्टीपल कथा कहले तांकर कंफ्यूजन बढ़िबो सो अवश्य तुम मैंने कहीं एवरेज नुह सब बहुत ब्रिलियंट पिला मु दीटा कथा भी कहि परिबी एटा 2 वाटर हला चारिटा हाइड्रोजन एक्सेस ले कोन करबी मु जो कहली सेतिकिटा OH माइनस आयन सेही पटे ऐड कली पुणी आउ थरे सेतिकिटा वाटर संगे संगे एपटे ऐड कली तापर मु कोन कहितली ना दीपट साइड रु गोटे कटि द एपट साइड रु 2 वाटर काटी दवा एटी कोएफिशिएंट 2 कर दवा जो पटे एक्सेस अछि तो गोटे पटु हटै दवा पूरा बस इक्वलाइजेशन ऑफ चार्ज एटी -1 एटा वाटर टा नो चार्ज एटी -4 जेहेतु रिडक्शन बां पटे रहिबो सो तीनटा इलेक्ट्रॉन ऐड कले -3 -1 हला -4 एटा -4 एटा न्यूट्रल सब्सटेंस MnO2 रो किछि चार्ज नुए सो फर्स्ट रिडक्शन स्टेप टा हला MnO4 माइनस प्लस 2 ऑर्डर प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिव्स MnO2 सॉलिड प्लस 4 OH माइनस देन ऑक्सीडेशन स्टेप कोन हिची ना जाइची SO3 2 माइनस सल्फाइड आयन हेची सल्फेट आयन सल्फर समान अछि ऑक्सीजन गोटे एक्सेस अछि राइट साइड रे गोटे तेणु 1 वाटर मॉलिक्यूल हैज टू बी एडेड इन द अपोजिट साइड बट देन दीटा हाइड्रोजन एक्सेस अछि सो दीटा OH माइनस ऑन द सेम साइड एंड इमीडिएटली 2 वाटर ऑन द अपोजिट साइड देन वाटर को काटो एठी गोटे वाटर एठी दुईटा काटी दियो सो वाटर टा गोटे पटु हटै देले देन इक्वलाइजेशन ऑफ चार्ज एपटे -2 -2 -4 एठी -2 सो एठी दीटा इलेक्ट्रॉन ऐड कले एपटे भी -4 सेपटे भी -4 तीन चारटा जति के अल्प देइची प्रैक्टिस कॉलेज आई हबो आ तुम जदि भाबुछ हमर तो सब कोचिंग रे पढ़ा हबो एडा काई खाली बसी जा वेल ता भी किछि नै you can watch me in action no problem बे एक्शन आसीनी जो एक्शन आसीबो सेते बेले आई प्रे and wish that जो माने focused nahanti even if you are uranium but you have lost focus
will be difficult to catch because the advanced level को जीबी एटा फाउंडेशन तो advanced level को जल जीबी जले मु वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करिवि हार्डर प्रॉब्लम्स करिवि सेतले ऊपर ऊपर पळि जबार चांस रहि जीवो जदि तमे किछि किछि प्रैक्टिस न करिवो जदि प्रैक्टिस करिवो यू विल एंजॉय नने मते देखि कि जीवो कोन मो गाली देबिनी अच्छा वर्तमान हे गला इलेक्ट्रॉन हे गला वर्तमान दीटा ऐड करिवा दी पट को ऐड करिवा चलो एटा को देखा जाउनी आकु आनिबा हमर विजन को हाँ MnO4 माइनस गोटे अच्छी किछि अच्छा गुणिबा परा एटी 2 इलेक्ट्रॉन एटी 3 अरे केते एटी 2 एटी 3 तेनु एटी 2 रे गुणिबा एटी 3 रे गुणिबा सो दैट 6 इलेक्ट्रॉन अरे हे एठी कोन गुणी देली मो एठी परा एठी अछि so 6 electron 2 रे सॉरी 2 रे so 82 so 82 रे 83 रे मु भूल कर देली so 6 इलेक्ट्रॉन कटि गला तापरे आमे जदि टिके मांदा पिला हिथिबा सब गुडा को सब बटे लेख तापरे इक्वलाइज करिया तार मु टिके मांदा पिला मु 2 2 जा 4 mn माइनस एठी लेखिली पुनी एपट साइड रे मु देखिली कोन 2 2 जा 4 वाटर भी लेखिली ए सॉरी 2 ना एठी तो किछि नथला 2 MnO4 माइनस लिखिली 2 2 जा 4 वाटर लिखिली पुणी एपट साइड रो तळे अछि 3 सल्फाइड आयन लिखिली पुणी 3 2 जा 6 OH माइनस सब लिखिली जहा बाँ पटे अछि सब लिखिली से रिपीट हो पुणी ताको सरल करिवा डाहण पटे कोन अछि 2 रे गुणिया को भूलिबोनी 2 MnO2 प्लस एठी 2 4 जा 8 OH माइनस तलपटा देखिबा तलपटा 3 सल्फेट आयन आउ 3 रे गुणले 3 वाटर वर्तमान OH माइनस देखिबा को पटे अधिका अछि एटी 6 OH माइनस अछि एटी 8 OH माइनस अछि राइट हैंड साइड रे OH माइनस आयन आसीबो एंड वाटर एटी 4 अछि एटी 3 अछि वाटर टा लेफ्ट साइड रे आसीबो गोटी तेणु सी तईबा बेनाजीर बोधे ठीक कहूला मो सो ऑल्सो मिस्टर फाटरो 2 MnO4 माइनस मु देखे प्लस 3 SO3 2 माइनस एठू 4 वाटर रु माइनस गले 3 वाटर बाँ पटे रहिबो एक्सेस गोटे वाटर देखिलो यूजुअली वाटर टा राइट रे रहे किंतु एठी वाटर टा लेफ्ट रे तुम जदि आयनिक इक्वेशन न कर दबो गोटे लोक तुमको जदि भूल रे मॉलिक्यूलर इक्वेशन रे वाटर टा को राइट रे दे देबो OH माइनस टा को लेफ्ट रे देथिबो बैलेंस करो मुंडो पिट ढो ढो पिटले भी जानि परिबोनी जेते चेष्टा कले भी हबनी एठू एटा कला बेलको सेटा अधिक आइ होतबो सेठी कला बेलको एठी अधिक आइ जाइबो किछि हबनी तेणु आयनिक इक्वेशन सब सॉल्व कर दबो सो हब 2 MnO2 प्लस 3 SO4 2 माइनस बस प्लस OH माइनस 8 OH माइनस 6 OH माइनस सो 2 OH माइनस रहिला एक्सेस एया कहितला कि बेनाजीर बेनाजीर Yes, sir. Yes, sir. तो भलो पिला मु देखिलेनी आई विल बी इंटरेस्टेड इन यू बेनाजीर Yes, sir. definitely to guide you I will be giving my best Sir, I would be glad if you do, sir. yes because you are focused गोटे गोटे गो रे तमे ठीक कर दलो इट्स नॉट दैट इजी यू नो फर्स्ट टाइम अच्छा तमे देखि ना ऑनेस्ट विथ ऊपर वाला तमे आंसर Yes, sir. देखि कहना तो No, sir, sir, I had not downloaded that file also. ऊपर वालों की कसम ऊपर वाले का कसम खाओ Yes, sir. खाओ ऊपर वाले का कसम Sir, ऊपर वाले की कसम. नहीं तुम खाओ Sir, ऊपर वाले की कसम. हाँ ये मेरा तसल्ली के लिए तुमने बोल दिया मुझे बहुत अच्छा लगा सेया कहथिला कि से 2 3 1 2 3 2 2 3 1 2 3 आउ कार ठीक थिला रुद्र तुम ठीक थिला आज्ञा सर आउ कार ठीक थिला सिजल बुझिलो Yes, sir. अन्य माने बुझिलो तो हाथ टेको को माने बुझिलो को माने बुझिलो हाथ टेको प्रणव भी लेट रे जॉइन करी भी सी बुझिलानी प्रणव तमे जॉइन करूचो दैट इटसेल्फ इज ए कमेंडेबल वर्क कारण सब पिला जानती जे मो प्रोग्राम रे जॉइन कले हम प्रोग्राम रे
सी सहजरू केतबेले तुम भितर को चल जाइथिबो तुम जानि परिबोनी you will be diving deep in the ocean in a sustained manner. Okay, आमे एठी सारिबा आ गोटे मेथड तुमको बतौची तुम्हें कंफ्यूज मोटे हबनी मु जोटा ए रूलटा लिखि दियो लिखि देलनी मु गोटे सेकंड रूल तुमको बतैबी not that you know the only rule that you can इंटेंशन मकसद है हाइड्रोजन ऑक्सीजन को समान करना कैसे करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है तो एक रूल थर्ड रूल ये है सेकंड एंड थर्ड रूल मैंने क्यों इस रूल को चूज किया इसका वजह यह है ओनली वन रूल इज डिफरेंट फ्रॉम द एसिडिक मीडियम रूल बट अभी जो मैं रूल आपको कहूंगा इसमें दोनों चेंज होंगे सेकेंड एंड थर्ड दोनों पॉइंट चेंज होंगे इसलिए मैं ये नहीं कहता हूं लेकिन मैं कह सकता हूं এটা লিখি চলন লিখি দিল लिखिला लिखिला पर हाथ रख बिकॉज आई हैव टू आउ आज 7 जाके करबा आउ 7 रु कारण मोर गोटे मीटिंग 7:30 अच्छे आई हैव टू प्रिपेयर माय सेल्फ फॉर द मीटिंग so we'll progress and I will be within half an hour I will be discussing the 11 varieties of non-redox reaction today and I'll give you the task टिके परिश्रम करो सोई पड़ले केमत हबो टिके अर्ली मॉर्निंग उठ स्कूल जीवा पूर्व टिके घंटाटे उठ आ तो 10 दिन पर हमर देखा हबनी तमर देखा हबनी एतिके फायदा उठे दियो and give me your best when I am intending to give my best you also should give your best yes मु जानू छी तमरो बहुत चैलेंज अछि कि मोर भी इक्वली चैलेंज अछि मु बसुनी तो सोइनी तो जदियो आई एम ए रिटायर्ड पर्सन आई एम नॉट स्लीपिंग you know you can't gauge or fathom to what extent I was feeling restless yesterday Samita we attended a get together to the same party but to me it was just like going to jail because I do not have any test in a get together waiting for eating and doing nothing constructive लिखिलनी ओके ओके देख यही जिनसटा को आमे केमती आमे करि परिबा से MnO4 माइनस गिव्स राइज टू MnO2 सॉलिड बेसिक मीडियम रे आ गोटे रूल तुमको बतौछि तमे तो भल पिला जदि हेतिबो ए रूल भी अप्लाई करि परिबो से रूल भी अप्लाई करिबो किंतु मु चाहिबी तुमे गोटे रूल को फॉलो करो प्रथमटा ठीक अछि गोटे मैंगनीज अछि दीटा हाइड्रोजन एक्सेस एटी सेकंड रूलटा भी चेंज हला add OH minus ion on the opposite side on the basis of X oxygen दीटा ऑक्सीजन एटी एक्सेस अछि वर्तमान वाटर न ऐड करी करी OH minus ion तर opposite side रे ऐड कली on the basis of excess oxygen वर्तमान मोर ऑक्सीजन समान हे गला by adding OH minus not by adding water then जति की हाइड्रोजन एक्सेस हला एटी हाइड्रोजन दीटा एक्सेस हला सेतिकिटा वाटर on the opposite side and setikita OH minus on the same side so that एटी 2 2 4 ऑक्सीजन 2 2 4 2 6 एटी 4 2 6 हाइड्रोजन 4टा एटी 4टा so एठी मध्य एका जिंस हला यू एनालाइज डोंट आस्क मी केमती हला यू निजे देखो एठी ऑक्सीजन को समान कले बाय OH माइनस आयन सेठी ऑक्सीजन को समान करथिले बाय एडिंग वाटर एठी ऑक्सीजन को समान कले बाय एडिंग OH माइनस जदि कि हाइड्रोजन एक्सेस हला ताकू जदि आमे ऑपोजिट साइड रे वाटर ऐड करी हाइड्रोजन एक्सेस करबा हबनी कारण जदि 2 वाटर लिखिबा पुनी ऑक्सीजन एक्सेस हो तेनु सेतिकिटा वाटर लिखिकरी सेतिकिटा OH माइनस लिखिले हमर 2 ऑक्सीजन कटि गला एवं हमर जो दीटा हाइड्रोजन एक्सेस टा सेटा रहिला 4 हाइड्रोजन रु
टू हाइड्रोजन कटिगले टू हाइड्रोजन एक्सेस है सो हाइड्रोजन बैलेंस हो गला आउ ऑक्सीजन कटिगला जो एक्सेस ऑक्सीजन हो जाइथिला सेटा 2 OH माइनस ऐड कला पर ऑक्सीजन टा कटिगला हाइड्रोजन जति हवा कथा अपोजिट साइड रे दीपट साइड रे मैचिंग तो कोटा भल लागुची एटा ना सेटा तापर एका जिंस सब अल्टीमेटली रिजल्ट एका हो सर एटा हां एटा कर सर एटा हां हलो मु ऑप्शन दे देली मु गधिया मानक पई सेटा करछि कारण गोटिए रूल टा चेंज हला एटी दीटा रूल चेंज हला OH minus ion to be added on the opposite side on the basis of excess oxygen and on the basis of excess hydrogen same number of OH minus ion on the same side and same number of water molecules on the opposite side. So मो देछि मोर जो तुमको हैंडआउट ता देछि ता देर अल्टरनेटिव मेथड भी लिखिछि बेसिक वीडियो पर से जिंस देखि दबो लिखिया दरकार नहीं हैला नाउ तसल्ली हो गया अभी हम देखेंगे आफ्टर हैविंग यू नो वर्तमान जेतेटा दबो फॉर एग्जांपल गोटे क्रिटिकल इक्वेशन सेठी मु डील करिछि गोटे क्रिटिकल इक्वेशन एटा कर दबो एटा तमे निजे करिवो पूरा फोकस माछरंका चढ़ई भलिया करिवो ननी भूल भाल हो जोड़ा एक्सेस नहीं ओएन मेथड रे ओएन मेथड रे ओएन मेथड रे जो प्रैक्टिस करी न कारण काली सब डेरी रे देली तमे दीटा जाक करियो पड़िबो ओएन मेथड मध्य दरकार मॉलिक्यूलर इक्वेशन पाई जदियो ओएन मेथड कैन बी adopted for balancing ionic equation but I will not recommend because there will be a quarrel tussle between the actual charge and the fake charge मना करी भी करिया को किंतु फिर भी आप अगर करोगे हो सकता है ऑक्सीडेशन में जति चेंज हला टोटल चेंज मल्टीप्लाई विथ द अदर आर चेंज तेरे आयन मान को मध्य हैंडल करिवो एवं तापर इक्वलाइजेशन ऑफ चार्ज करिवो हबो जो ईबीडी मेथड कहिची देखो गोटे एग्जांपल मु तुमको देइची एटा तो मु क्लास करैथिली किंतु एटा गोटे एग्जांपल देइची तमे देखिथिबो जे न देखिथिबो एटा गोटे क्रोमियम आयोडाइड ट्राइआयोडाइड क्लोरीन ही डाइ पोटेशियम डाइक्रोमेट तयारी हिची पोटेशियम पर आयोडेट KCl एटा ठीक FeS2 भलिया आई हैव टू मेंटेन द रेशियो क्रोमिक आयोडाइड रो जो रेशियो अछि 1:3 रेशियो दैट हैज टू बी मेंटेन सो आग कली एठी दीटा ऑक्सीडेशन क्रोमियम टा +3 रु +6 को जाईची एवं -1 आयोडीन टा -1 रु +7 को जाईची सो मु कर देली क्रोमियम +3 रु +6 को तीनटा प्रथमे तीनटा इलेक्ट्रॉन लिखिथिली तापरे मु ताको पछरे 2 गुणीची काई गुणीची मु कहबी एठी I- टा I+7 को जाईची मु कहिची इलेक्ट्रॉन बैलेंस डायग्राम रे खाली गोटे एटम नबो एवं एठी मु इनिशियली लिखिथिली 8 इलेक्ट्रॉन तो ये 6 गुणिली कहीं 6 गुणिली ये क्रोमियम ये दीटा थिला मुझे 6 गुणी नकरी 1:3 रेशियो रखते भी था 2:6 नकरी 1:3 करते ये हाफ आसो जेहेतु ये क्रोमियम राइट साइड रे दीटा अच्छी मु क्रोमियम दीटा करने 2 गुणी देली सो ये 3 थिला 6 हो गला जेहेतु ये 1:3 रेशियो मेंटेन करी बिटवीन क्रोमियम एंड आयोडीन से 2 रे गणची ये 6 रे करिया पड़ियो करी फाइनल ऑक्सीडेशन स्टेप टा को फाइनल कर देली 54 टा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होला 2:6 रेशियो माने 1:3 रेशियो रे देन क्लोरीन नेली 0 रु -1 सेटा गोटे इलेक्ट्रॉन तेरे 54 रे गुणी करी आई कैंसल 54 इलेक्ट्रॉन्स एंड आई गॉट द EBD दिस लुकिंग टू द EBD आई बैलेंस द ओरिजिनल मॉलिक्यूलर इक्वेशन 2 Cr 3+ and 6 I- 2 at coefficient of 2 a chlorine रो coefficient of 27 because हमर 54 टा 0 मार्का क्लोरीन दरकार सो 27 Cl2 एटा दरकार एटा लास्ट को हिट एंड ट्रायल रे पाइबो एटा पाइछि मु एटा तापर राइट साइड को दीटा क्रोमियम +6 अछि ऑलरेडी Cr207 रे दीटा +6 मार्का क्रोमियम अछि आयोडीन +7 6 टा दरकार 6 KiO4 कली 54 टा क्लोराइड -1 मार्का दरकार सो 54 KCl कली एतो कला पर हिट एंड ट्रायल हमर बां पटे 27 2 जा 54 क्लोरीन समान हे गलानी केवल आमर पोटासियम टा देखा एपटे केते ना 54 + 6 + 2 62 टा जेहेतु पोटासियम अच्छी तेणु ये मत जमती हेले 62 करने पड़ो पोटासियम
तेणु ता फल कौन हम हाइड्रोजेन हो गला 62 तेणु ये 31 करने पड़ो तेणु ऑटोमेटिकली तुम देख ऑक्सीजन संख्या दीपट साइड रे समान ये 62 ऑक्सीजन ये 7 युक्त 6 24 24 7 31 प्लस ये 31 तो 31 31 60 सो आम सब प्रकार लॉजिक जानले दरकार पड़े से जो टोका किए पचार जे P4 P2H4 को डिस्प्रोपोर्शनेट कले फॉस्फिन एंड टेट्राफॉस्फिन जो बाहर ताकू आमे ओएन ये जो ईबीडी मेथड रे न करिकि मु तुमको कहली अलजेब्रा मेथड रे करो जोटी तुमको देखा जाउची फ्रैक्शनल लागुची तुम अलजेब्रा मेथड आल्सो एलिगेंट मेथड एक्स वाई पी क्यू नै करी गोटा को 1 धर एवं तापरे प्रति एलिमेंट को बैलेंस कर एलिमेंट वाइज बैलेंस कले सॉल्व करू 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 साइमल्टेनियसली सॉल्व करू करू गोटा पर सब गुडा बाहर जी एटा तो रेशियो ना होल नंबर रेशियोटा जण गोटा को 1 धरिबा हमें अन्य गुडा फ्रैक्शन आसले फ्रैक्शन टा को उड़ेई दबा सो वी सर हैव एटा 3D को कोडा कोडा नहीं एटा तमे निजे देखिबो एटा को माने केति को बुझिलो कहलो मु आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम को माने बुझिलो मु जोटा कहली एटा किछि बड़ कथा कहली मु एफईएस तमे नथिलो काली निहार तुम काली आसी नथिलो मोर एफईएस2 जो आयरन पाइराइड फुल्स गोल्ड रो जो कहितली एफईटा +2 रु गला +3 को पुनी सल्फरटा -1 रु गला +4 को एग्जैक्टली एका स्टाइल एटा एका स्टाइल तुम नथिलो कि वीडियो देखिनो एथि जणा पड़ला वीडियो देखिनो बाबा तुम टिके वीडियो देखो बाबा तुम भलो पिला सर देखि देखिছো कि ताहले समस्त छड़ा तुम छड़ा समस्त हाथ टेकिले से केबे मिछ कहबेनी मते इंप्रेस करियो मु को तुमरो इंस्ट्रक्ट माने परमानेंट इंस्ट्रक्टर ना तुम कोच मु गोटे हमर सब बळे चले मते मजा लागे मु ए वर्ष भी कली and as long as I am active I am planning to continue this so Surya Mani Behra sir oh ताके जगह रे शुभम अछि हेलो शुभम सिमरन साहू नमस्ते so today large number of viewers are watching us but yesterday it was our failure day suddenly we changed the timing from 6:30 to 5:30 so many they could not know the change of timing I'm sorry for the inconvenience is regretted okay तुमको केते बेले आउ केते बेले मु कहि देबे बाबा हला आमे आ गुटे जेहेतु समय अभाव आमे आ गुटे को जिबा हला निहार मु कहि देबी तमे आउथरे भी देखो निजे देखो कहि दब एबे देखिबा या देखो आगुरु मु कहिची देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कोन either oxidation number change होबो by electron loss electron gain redox reaction or non-redox reaction जोटा को हमें गोटे हाई फाई रे ना देइछु metathesis usually this metathesis term will not be found in book this is the creation of this instructor following some American literature so doesn't matter सेत पे मु लिखि देइछि non-redox बोली कहा confusion होबनी खाली metathesis लेखुनी non-redox so non-redox मात्र 11 टा तुम्हें प्रैक्टिस करियो पड़ियो तुम्हें कहबो हम प्रैक्टिस करबिनी हेइ जीवो आपण मते धरि करी करांतु ना ये तो अति इजी कहार वैलेंसी चेंज होबनी खाली डबल डिस्प्लेसमेंट हो फॉर एग्जांपल मु तुमको नुवा पिला मानु को टिके ये करियो को चाहूची आगो नॉन रिडॉक्स तापर रिडॉक्स आमे जिते प्रकार 10th क्लास रे पढ़ी जे विभिन्न प्रकार सोडा सब आरी भितरे आइदर ये नॉन सीए सो 1000 प्रकार क्लासिफिकेशन करी किछ लाभ नै अवश्य आमे करिवा आमे ताटू अधिका करिवा डिस्प्रोपोर्शनेशन कम प्रोपोर्शनेशन केते प्रकार करिवा किंतु सेगुडा को सब ये दी मेन जाति जाति दीटा गोटे हला नॉन रिडॉक्स गोटे रिडॉक्स नॉन रिडॉक्स 11 प्रकार छडा आउ नाही सो सेटा धर मु गोटे प्रथमे करिवि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यार आयन ता तादेर लागिवो ता आयन ता सेठी लागिवो एवं प्रोडक्ट वन ऑफ देम विल बी इनसॉल्युबल तकर सॉल्युबिलिटी रूल रे से माने जणा पड़िबे इनसॉल्युबल
किंबा उल्टा इनडायरेक्टली जदि जानिबो जे आर गोटाए सॉल्युबल तो आरटा निश्चय इनसॉल्युबल कारण डबल डिस्प्लेसमेंट रो मूल मंत्र ड्राइविंग फोर्स हला वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट सो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको कहती तुम 10th क्लास रे पढ़ीछ फॉर एग्जांपल मु कहबी लिखिबी से से बेरियम देखिबा के जण फॉर्मूला राइट बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम फॉस्फेट मु सहजियाटे लिखुची ए दीटा एक्वियस सॉल्यूशन को मिसेले गोटे प्रेसिपिटेट हबो तुम जानि परिबो फॉर्मूला लेख पुराना यूरेनियम पिला जो माने फोकस्ड से माने करि परिबो समस्त करि परिबो कारण से सब तापरे तेल लुण संसार रे माति गलो तमे तुम तेल लुण संसार मु मो कथा कहूनी तुम तेल लुण संसार होची ट्यूशन कोचिंग ए सब जिंस तमरी बही पाठ ए सब घोषा चल तेणु तापरे बहुत पिला भूली जाइछ जो माने फोकस्ड रे अछंती लाइक रुद्र टू सम एक्सटेंट अन्य माने भी अछंती आयुष सो रुद्र हर्षिता आयुष ये तीन जन हाथ टेकिल मु बैलेंस करे कथा कहूनी बैलेंसिंग पाई हाथ का केल नॉन रिडॉक्स पाई केवल हीट एंड ट्रायल मेथड इज द करेक्ट इज द ओनली way or method to balance but if you write the formula wrongly then if you break your head into 10 pieces 20 pieces you can't balance in this life and in hundreds of lives to come if at all we take the human life we don't know people say many things but we are not sure of anything सर 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 हमें नॉन रिडॉक्स रिएक्शन को अलजेब्राइक मेथड रे बैलेंस कर परियानी सर नॉन रिडॉक्स आयन इलेक्ट्रॉन मेथड रे जदी एटा को बैलेंस करिवो लोक भाबी बोकाटा नहीं सर अलजेब्राइक मेथड हां अलजेब्राइक मेथड अल्जेब्राइजेशन सर अलजेब्राइक ना दरकार नहीं ना 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 सेगुडा को सब रिडॉक्स रिएक्शन पाई जोठी 11 प्रकार रो रिएक्ट आसी जीवो मु जोटा कहिबी डिस्कस करिवि सेटारे किछि दरकार नहीं खाली इंस्पेक्शन मु तो हिट एंड ट्रायल मेथड कहनी मु कह इंस्पेक्शन मेथड एन देखिबो अरे इठी कोन सल्फेट आयन तीनटा अछि हे एपड 3 गुण एपड कोन एल्युमिनियम दीटा अछि एठी 2 गुण तापर ऑटोमेटिक सब फॉलो कर जिवो हिट एंड ट्रायल की गोटे हाथ टेकिलानी ने बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम फॉस्फेट बाबा सोडियम सल्फेट नो समिधा तुम्हें कौन निद मानलानी कि शोइबा टे कमी गला कि नातुणी देवी मु कहिछि गोटे कथा सल्फेट से लिखलेनी फॉस्फेट आउ थे चेंज करिकि मत देखाओ अच्छा कौन हैला सीजल कहलो मते डाक बैलेंस को कहनी मु एई जो पढ़े भी तुमको 11 टाइप्स ऑफ नॉन रिडॉक्स रे बैलेंसिंग आदो कहबिनी सेटा तम सान रिधि सॉरी समिधा कहबो ता सान भौणी सिद्धि को तू कलु कि आउरी तळ जदि कि द्वितीय श्रेणी पिला तो कलु से करिवो तुमे एबे करिया दरकार नै मते प्रोडक्ट रो करेक्ट फार्मूला लेखो बेरियम क्लोराइड फार्मूला कोन सीजल BaCl2 प्लस plus Na3PO4 प्रिसाइजली Na3PO4 होची सोडियम फॉस्फेट रो फार्मूला इस वैक अच्छा तापरे Ba3PO4 बेरियम आयन लागिवो फॉस्फेट आयन संगरे क्लोराइड आयन लागिवो सोडियम संगरे आगो पॉजिटिव आयन लिखा जाए तापरे हां त को बेरियम फॉस्फेट रो फार्मूला Ba3 bracket PO4 2 plus NaC. Cecil, you are also the other one whom I can help. Thank you, sir. Barium phosphate plus sodium chloride रा formula कौन Na3Cl2 मु कहीं कोई लिखली in earlier times आमे तो रेवेन्सा कॉलेज रे अध्यापना करूथुलु जेतबेले सेतबेले +2 नथिला हां हां +2 थिला तो +2 रे पिला मन पळे आसथे हां कॉलेज रे थिला एबे सिना कॉलेज रे बाहर जाईची से हायर सेकेंडरी को पळे आछी तो कॉलेज रे अटैच हेकी थाए तो पिला को देखुथुलु क्लास रे तांको पचारलु प्रैक्टिकल क्लास रे तांको सब परीक्षा करू कोन कोन जानि छथि एई टाइप रो से जानि छथि ए सर Na3Cl2 अछि लिखि देली
गधा तू लुण खाइनु लुण लुणर फॉर्मूला तो जदि Na3Cl2 लिखुचु ताहले कौन तू केमिस्ट्री पढ़िचु अरे NaCl तैयारी कले तार जतिकी बैलेंस तार जतिकी थंट तार जतिकी गात से मैचिंग हबो टोटल पॉजिटिव चार्ज संगे टोटल नेगेटिव चार्ज समान करिवो तो कौन सोडियम क्लोराइड फॉर्मूला NaCl सर NaCl NaCl आर वैलेंसी 1 ता वैलेंसी 1 NaCl तापरे जेकी बैलेंसिंग मु कहि बिनी करियो तुमे द्वितीय श्रेणी पिला पर साहाय्य नियो कौन सी मेथड जो जेते मेथड आम शिखिले जोड़ा किछि एप्लीकेबल नुहे इंस्पेक्शन देखो बेरियम 3टा अछि एटी 3 गुणलो बेरियम 3टा अछि फॉस्फेट एटी 2टा अछि फॉस्फेट 2 गुणलो सरला फॉस्फेट आयन को समान कलो बेरियम आयन को समान कलो तापर 6टा सोडियम हे गला 6 कर देले ऑटोमेटिक क्लोरीन मध्य 3 2 जा 6 हे गलानी हौ जदी फार्मूला भूल लिखितो केबे हो केबे देखिलो तो हाउ इंपोर्टेंट इट इज टू राइट करेक्ट फार्मूला ओके एटा हला डबल डिस्प्लेसमेंट कहलो दीटा भितरु कोउटा प्रेसिपिटेट तमरो नॉलेज ऑफ सॉल्युबिलिटी रूल लगे करी कहलो दीटा भितरु सोडियम बेरियम फॉस्फेट ऑब्वियसली सोडियम क्लोराइड हम जानि ऑल सोडियम कंपाउंड्स आर सॉल्युबल एक्ट सो बाध्य होकरी तुम जानि परिबो जे डबल डिस्प्लेसमेंट रे गोटे निश्चय छेना छिड़ीबो अरे छेना कोन माने गोटे प्रेसिपिटेट बाहरिबो धला हो कि एटा बेरियम फॉस्फेट इज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट सो धला हो कि नेली हो कि ब्लू हो सॉरी येलो हो जहा गोटे रंगर प्रेसिपिटेट बाहर सो ये गला गोटे प्रकार सेमती एटा हला डबल सेमती तार जातिया गोटे से पाखा पाखी न्यूट्रलाइजेशन एटा जोटा तो पिला बेलु जानिछ गोटे एसिड संगे बेस रो रिएक्शन कलो धर मु करिवि सल्फ्यूरिक एसिड देबी ता संगे मु देबी धर एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कि एल्युमिनियम ऑक्साइड you know aluminum oxide metallic oxides and hydroxides they are bases metallic oxides and hydroxides they are bases ता संगे सल्फ्यूरिक एसिड देले एटा मध्ये गुटे डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप रो किंतु वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज वाटर हाइड्रोजन आयन संगे ऑक्साइड आयन कि हाइड्रोजन आयन संगे OH माइनस आयन मिसले वाटर हबो सो वाटर इज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सॉल्ट हबो कोन के लिखिलो कोन फार्मूला हबो एल्युमिनियम सल्फेट रो कोन फार्मूला अरे बेनजीर सर Al2 या कहीं बेनजीर नहीं सर इधर इधर ही हो बेनजीर नहीं है कहाँ गए तुम नहीं सर इधर ही हो ऊपर हो अच्छा ठीक है क्या फॉर्मूला बताओ सर यस सर सर Al2SO4O3 प्लस वाटर जस्ट वाटर देन वो बैलेंसिंग आपको मैं कभी नहीं कहूंगा ये मेटाथेसिस रिएक्शन में आप बैलेंस करो मैं कहूंगा राइट प्रोडक्ट लिखो ये हला न्यूट्रलाइजेशन आ गुटे आज करबा सेटा होची नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ वाटर मु सब नोट्स दे देची तुम प्रैक्टिस करिया को दे देची नॉन मेटालिक ऑक्साइड गुड़ाक सब एसिडिक ऑक्साइड या को कहती एसिडिक ऑक्साइड कहीं ना अवश्य 3टा एक्सेप्शन अच्छी कार्बन मोनोक्साइड नाइट्रोजन मोनोक्साइड बा नाइट्रिक ऑक्साइड आ गुटे हा 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 कोन सर laughing gas N2O that you can call it nitrous oxide or dinitrogen monoxide जहाँ भी कहो सेटा होची और nitrogen 1 oxide because nitrogen has an average oxidation number of +1 so we can call it by any name so एटा होची न्यूट्रल किंतु अन्य सबु नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स माने पानी रे पकेले माने एसिड फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड रे पानी रे पकेले कोन हबो कार्बोनिक एसिड जेंदी बैलेंस करि परथुबो मन इच्छा कले हबन धर SO3 SO2 रे पानी मिसेले कोन हबो कोन H2SO4 ना H2SO3 H2SO3 3 4 कले बैलेंस करि परिबो कारण +4 एठी भी +4 कोनोसी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुए नहीं तब जदि H2SO4 कर दबो +6 तले ऑक्सीडेशन जदि हला रिडक्शन काई खोजी खोजी थकी जीवो पाइबोनी सेमती तुमे केतुडा जो एसिड मानकर एमान को कहंती ए मानकर एनहाइड्राइड ऑफ द एसिड्स को एसिड रो एनहाइड्राइड माने पानी उल्टाटा तर सल्फ्यूरस एसिड रु पानी तमे नेई जीवो एनहाइड्रस कर दबो डिहाइड्रेट कर दबो से SO2 दबो तार उल्टाटा सेमिति तुम कहबी फॉस्फोरिक एसिड रो एनहाइड्राइड कौन को नॉन मेटालिक ऑक्साइड रे तमे पानी मिसेले फॉस्फोरिक एसिड दबो वेल
तुम्हें जदि घोषिच किंतु घोषिबा दरकार नहीं तुम्हें निजे पानी माइनस करिकरी बाहर करिवो सो देयर आर odd number of hydrogen atoms so you cannot remove all hydrogen atoms from H3PO4 unless you have an even number of hydrogen atoms so the minimum number that you have to multiply is 2 2 रे minimum multiply कले even टा odd टा even हे जीवो so हे जीवो कौन H3P2O8 हमर आसी गलानी दीटा phosphoric acid नेले sorry H6 I'm so sorry 6टा हाइड्रोजन 2टा फास्फोरस 8टा ऑक्सीजन सेथुरु केतेटा वाटर नहीं परिवो ना 3टा वाटर मॉलिक्यूल नहीं परिवो यू हैव टू रिमूव ऑल हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ वाटर यू हैव टू रिमूव ऑल हाइड्रोजन सो 3 वाटर नहीं गले कौन रहिला बाकी कौन रहिला P2O5 P2O5 3 वाटर माने 3 ऑक्सीजन 6टा हाइड्रोजन सो 6टा हाइड्रोजन दी चली गला और 3टा ऑक्सीजन चली गले रही गला बाकी P2O5 so P2O5 is the anhydride of H3PO4 तमे घोषुदा बसिक P2O5 यार जोटा ई किसी काम न धर मु कहबी HiO4 पर आयोडिक एसिड रो anhydride की फाइंड आउट आई गिव यू 2 minutes टाइम व्हाट इज द anhydride of पर आयोडिक एसिड जोटा हमें अष्टम सेंटर रे करथिले सब पोडी खाई सारी बणी एक्सेप्टिंग परहैप्स रुद्र पाइन में अन्य मानक पई परहैप्स कहली कयोटा सब तेल लुण संसार रे मिसी गला परे आमे आउ एउडा को पूर्ण बुझो आमे सब एडवांस जिंस डिस्कशन करथिले नवम श्रेणी पई अष्टम श्रेणी पई जोटा काई मन रखियो जदियो हमर एज हेने आमे पूरा यंग पिला छोटो पिला किंतु आमे अननेसरी जिंस उडा का आमे मन रखि नै सुरमणि सर ना सुरमणि जगह अच्छा किए ये शुभम तुम्हें क्लास आसी नथिला बोली कहूच तेणु तुम्हें गत काली वीडियोटा निश्चय देखिबो जोटा पात्र बाबू बुझी पारलेनी कहले आउथरे बुझिबाकू सेटा तार मंजी सेठी रहिछि मल्टीपल ऑक्सीडेशंस मल्टीपल रिडक्शन थिले केमती स्टोकियोमेट्री मेंटेन करिवो 1:2 रेशियो कि 1:2 जहा थिबो से रेशियोटा केमती मेंटेन करिवो आमे गोटे करथिले FES2 रे तार वीडियो अछि तमे जदी हम वेबसाइट बुझिबो ताहले पाई जिवो सब दिन रो वीडियो लिंक दिया आइछि 3 दिन सरलानी 3 दिन रो वीडियो लिंक दिया आइछि आज 4th रे दिया हबो तो सेटा पाइबो किंबा SST केमिस्ट्री मोर जो मोर चैनल रो ना सेठी की पळेले तमे मोर देखि परिबो जो ये ता कोन कहंती प्लेलिस्ट रे मारी पाले 10 days फाउंडेशन कोर्स फॉर क्लास 11 2024 सेथरे मार देले भी पाई जिवो कोन कार हला सर I27 I27 केवल समिधा और प्रणव रही गले केमिति देख किसी असुविधा नहीं आई एम हैप्पी दैट प्रणव सेठू जाजपुर अंचल से चाहिए आसी जॉइन करने एंड समिधा तो भल पिला तो ये देख हाइड्रोजन गोटे अच्छी तेरे गोटे गोटे वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर पारिबनी तेणु प्रथम आग ऑड को इवेन कर जो देखिए ऑड नंबर अच्छी जो इवेन अच्छी तो भल कथा आउ दरकार नहीं गुणिबा किंतु जोटा ऑड थी ताको इवेन कले 2 रे गुण मिनिमम यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 2 रे गुणले कोन होबा H2 हे गला आईटा 2टा आसी गला आयोडीन 8टा आसी गला ऑक्सीजन सेथुरु गोटे वाटर मॉलिक्यूल चली गला और रहउची कोन हेटा तो पळे गला I2 रहिला आ गोटे चली गले ऑक्सीजन रहिला I2O7 सो दैट इज द अनहाइड्राइड ऑफ परआयोडिक एसिड एमती सबुरो जानि परिबो प्रैक्टिस करिवो टिके तो आज आउ समय ही पारुनी तुम्हें मु तुमको देबी तुम्हें निजे आग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड उपरे आनिबो मास्टरी जेति कि मु देइछि ताको किछि किछि प्रैक्टिस करिवो नले से हाथ खसी जीवो आउ एइटे जो 11 मेटाथीसिस देइछि ताको टिके देखिबो तो सब सहज डबल डिस्प्लेसमेंट अछि लिखि देइछि बैलेंसिंग करो नै बैलेंसिंग ऑफ ऑल मेटाथीसिस रिएक्शन टू बी डन बाय हेड एंड ट्रायल डोंट डू मुझे कहली नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ वाटर जोटा एबे कहउतिली देन मेटालिक ऑक्साइड विथ वाटर तार ऑक्साइड ता हाइड्रोक्साइड दबो एटा हार्ड मेटालिक ऑक्साइड रे वाटर देले तार हाइड्रोक्साइड दबो
नाइट्राइड कार्बोनेट सल्फाइड थायोसल्फेट एगुडा गोटे 4 नंबर पॉइंट रे देला माने गैस फॉर्मेशन रिएक्शन आना होची गैस फॉर्मेशन रिएक्शन एटा भी दे देखिबो मु भी करेइबी हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइड फॉस्फाइड सल्फाइड कार्बाइड एटा सब मेटाथेसिस heating of ammonium salt with any base to give ammonia displacement of more volatile acid by a less volatile acid amphoterism that is very important एटा सब काली करेइबी किंतु तुम देखि देथियो कि भलो हो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स दी प्रकार रो कैटेगरी रो थर्मल डिकम्पोजिशन अछि गोटे वेराइटी होछि रिडॉक्स रे नाइट्रेट मानकर ए सब किंतु कार्बोनेट बाइकार्बोनेट रो थर्मल डिकम्पोजिशन मेटाथेसिस रे कोनोसी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुएनी एमती 11टा मेटल हाइड्रोक्साइड रो थर्मल डिकम्पोजिशन उल्टाटा टू गिव ऑक्साइड कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन एटा 12th क्लास रे पढ़ा जाए किंतु मु कहि दे केमती ए न जानले 11टा कंप्लीट होनी सो कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन टा मध्य मेटाथेसिस कोनोसी चेंज हुए सो आज एटा तुमको टास्क दोनी एटा खाली मु देखैली काली कला परे अल्प समय भितर सारला परे मु रिडॉक्स को जीबी रिडॉक्स आ गोटे क्लास कला परे सीधा हमें जीवा मोल कांसेप्ट एडवांस मोल कांसेप्ट आउ तापरे concentration of solution then stoichiometry calculation using without concentration and using concentration that will be our climax तो इठी हमें शेष करूचे तमे के किछि कहबो कि before I close the video YouTube video and Zoom नहीं सर हाँ मते कहबे सर काली रो गोटे डाउट रह जायतिला हाँ तमे मते पचारिबो काली रो डाउट टा तमे मते ये रे पचारिबो कोथरे तमरो पर्सनल आईडी रे पचारिबो जदि भलो क्वेश्चन हेतिबो मु से आंसर टा करि करि दे देबी ग्रुप रे हला यस सर टिके मा तरतर होउची टिके उडे अटेंड करबी मीटिंग टा तापे टिके प्रिपरेशन हेबी ख्यापियो करबी हला बाय बाय Thank you, sir. Bye, sir. प्रणाम सर feel free to थैंक यू ask me any doubt in personal ID bye bye Bye, sir. थैंक यू सर नमस्ते सर